Hello students, welcome to all in Bishop Academy online classes. Dear student, in part 26 video, we have already solved question number 8 of miscellaneous exercise on chapter number 6. Now student, in part 27 video, we will solve question number 12 of miscellaneous exercise on chapter number 6 of maxima and minima from NCERT book. And question is, a point on the hypotenuse of a triangle is at a distance A and B from the sides of the triangle, so that the minimum length of hypotenuse is a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 3 by 2. एक बात स्टूडेंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी के बुक में मैक्सिमम लेंथ लिखा है, आप उसे इंप्रूव कर लीजिएगा, वो मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा. नाउ सॉल्यूशन. In this question, a point which is situated on the hypotenuse of right angle triangle. Then first of all, we construct a right angle triangle. Left triangle is triangle ABC, and on the hypotenuse AC, left a point P, and this point is at a distance of A and B from the sides of the triangle. Means quadrant of P is A comma B. Then first of all, we draw a perpendicular from this point to BC and also from P to AB. स्टूडेंट यहाँ हम लोग परपेंडिकुलर ड्रा किए हैं. अब यह जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, यह A यूनिट होगा, और यह जो डिस्टेंस होगा यह B यूनिट होगा. जब स्टूडेंट यह डिस्टेंस A यूनिट है तो यहाँ हम सपोज कर रहे हैं इस पॉइंट को M. जब यह A है तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी A ही होगा, और यह इसको M सपोज कर रही है. तो इस एंगल को हम थीटा NP is parallel to the BC. If this angle is theta, then by geometry this angle is also equal to the theta. Here AC is hypotenuse. Let length of hypotenuse AC is equal to L unit. Small L unit हम लोग सपोज कर लिए हैं, and L is equal to AP plus PC. Let this is equation number first. First of all, we find out value of AP and also value of PC. In triangle, right angle triangle है, in triangle PMC sin theta is equal to PM means perpendicular upon hypotenuse. Hypotenuse is PC. This implies that sin theta equal to value of PM is B upon PC. This implies that PC is equal to B upon sin theta. This equal to B cosec theta. Now in triangle ANP cos theta equal to, here NP is base means NP upon AP. This implies that cos theta equal to value of NP is A unit, then we write A upon AP. This implies that AP equal to A upon cos theta. This implies that AP equal to
a sec theta. Then from equation number first, L is equal to value of AP is a sec theta plus PC is b cosec theta. Now let this is second. Differentiating second with respect to theta, we get dl upon d theta equal to a d by d theta. Sec theta means sec theta into tan theta. Differentiation of cosec theta means minus b cosec theta into cot theta. D by d theta cosec theta equal to minus cosec theta into cot theta. Let this is equation number third. Again differentiating it with respect to theta, then we get d2l upon d theta square equal to a. यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला हम यूज करेंगे sec थीटा का, हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा मीन्स sec थीटा, tan थीटा इंटू tan थीटा मीन्स sec थीटा, और यहाँ पे जो tan थीटा मिलेगा उसमें tan थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस a sec थीटा हम लोग पहले डिफरेंशिएट कर चुके हैं sec थीटा इंटू tan थीटा, और tan में का मल्टीप्लाई किए हैं तो tan स्क्वायर थीटा आया a. अब tan थीटा का हम लोग करेंगे तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ sec थीटा है मींस a sec क्यूब थीटा. अब यहाँ स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसमें प्रोडक्ट फार्मूला यूज करेंगे तो b लिख दे रहे हैं माइनस b इन ब्रैकेट कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा. कोसेक थीटा का हो जाएगा फिर माइनस कोसेक थीटा इनटू कॉट थीटा इनटू कॉट थीटा. फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट प्लस प्रोडक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा कॉट थीटा का डी बाई डी थीटा. कॉट थीटा मींस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा. दिस इज इक्वल टू a sec थीटा इनटू tan स्क्वायर थीटा प्लस a sec क्यूब थीटा माइनस माइनस प्लस b कोसेक थीटा इनटू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस b कोसेक क्यूब थीटा. Let this is equation number 4. For maximum or minimum, dl upon d theta equal to 0. This implies that a sec theta into tan theta minus b cosec theta into cot theta equal to 0. This implies that here is right a sec theta means 1 upon cos theta into tan theta means sin theta upon cos theta minus b into 1 upon sin theta into cot theta means cos theta upon sin theta. This equal to 0. This implies that a sin theta upon cos square theta minus b cos theta upon sin square theta equal to 0. This implies that on simplifying we get a sin cube theta minus b cos cube theta upon cos square theta into sin square theta equal to 0. On cross multiplying we get a sin cube theta minus b cos cube theta equal to 0. This implies that a sin cube theta equal to b cos cube theta. This implies that sin cube theta upon cos cube theta means
tan cube theta. On simplifying, we get tan cube theta equal to b by a. This implies that tan theta equal to b by a whole raised to the power 1 by 3. This equal to b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. This implies that theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. Now dear student, here a and b are length, therefore length is also positive. If we find out d2l upon d theta square at the value of theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 3, then obviously value of equation number 4 is positive. यह स्टूडेंट यहाँ से वैसे ही क्लियर है, जब ये भी पॉजिटिव है, इसके जगह पर अगर हम वैल्यू रखें भी, पुट भी करें, इवेल्युएट किया जाए, तो यहाँ कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन इसको दिखाने के लिए, यहाँ से ही क्लियर है कि जब थीटा की यह वैल्यू यहाँ से मिला है, नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं, पॉजिटिव वैल्यू मिला है, तो उस पर डबल डेरिवेटिव पर जब इस पॉइंट को हम चेक करेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ लिख लेंगे ऑब्वियसली d2l upon d theta square at theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. This is equal to positive value. जब इसे पुट किया जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा. This implies that at theta equal to tan inverse b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3, length of hypotenuse is minimum. हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा वह मिनिमम होगा. अब स्टूडेंट हमें वह लेंथ प्रूफ करना है. स्टूडेंट यहां पर हियर tan theta this is equal to b raised to the power 1 by 3 upon a raised to the power 1 by 3 है. जब हम लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं sec थीटा और cosec थीटा की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी. तो हम यहीं से एक ट्रायंगल बना करके cosec थीटा और sec थीटा की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे. तो सुविधा के लिए m r को भी एक ट्रायंगल बना लिए. यह एंगल हमने सुविधा के लिए थीटा लिख लिए हैं. tan थीटा इक्वल टू b raised to the power 1 by 3 अपॉन a raised to the power 1 by 3 है. और tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन mn is b raised to the power 1 by 3 and nr is a raised to the power 1 by 3. Then by Pythagoras theorem we find out value of mr and value of mr is root a raised to the power 1 by 3 whole square plus b raised to the power 1 by 3 whole square. This equal to root a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3. Sec theta equal to hypotenuse upon base, then its value is equal to root a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 upon a raised to the power 1 by 3. And cosec theta equal to hypotenuse upon perpendicular, then its value equal to root a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 upon b raised to the power 1 by 3. Therefore length of hypotenuse is equal to L. This is equal to a sec theta plus b cosec theta plus b cosec theta. This implies that L is equal to a value of sec theta is root
a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 upon a raised to the power 1 by 3 plus b, value of cosec theta is root a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 upon b raised to the power 1 by 3. This implies that L is equal to a upon a raised to the power 1 by 3 means a raised to the power 2 by 3 into root a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 plus b by b raised to the power 1 by 3 means b raised to the power 2 by 3. स्टूडेंट सिंप्लीफाई किए हैं तो ये वैल्यू लिखे हैं रूट a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 L is equal to, ये कॉमन हो जाएगा तो जाएगा रूट a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 into in bracket a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 L is equal to, इसको लिख सकते हैं a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 1 by 2 into a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole का पावर ये होगा 1 और 1 by 2 क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगा a raised to the power 2 by 3 plus b raised to the power 2 by 3 whole raised to the power 3 by 2. This is required length of the hypotenuse, hence it is verified. Now dear students, some question is given in Google Classroom app. Thanks.